यहाँ पे श्री लंका की क्रिकेट टीम आई हुई है जो कि क्रिकेट खेल रही थी बैनुल अक़वामी। सर माजी में भी हमने देखा कि बहुत बड़ा हादसा हुआ था क्रिकेट टीम के साथ और उसके बाद इंटरनेशनल क्रिकेट पाकिस्तान से चली गई। श्रीलंका ने दोबारा वो सिलसिला रिवाइव किया और वो यहाँ पे आ रहे थे। इस दफ़ा उनकी मौजूदगी में जब हुआ तो ये बहुत ज़्यादा चहमें गोइयाँ शुरू हो गई कि सिक्योरिटी कंसर्न्स की वजह से वो जाना चाहते हैं। वज़ारत ख़ारजा ने, हुकूमत पाकिस्तान ने, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उनसे रब्ता किया तो हुकूमत श्रीलंका ने सर कमाल बहादुरी का फ़ैसला किया। उन्होंने कहा कि नहीं, हम दहशतगर्दी का ख़ुद शिकार रहे हैं, हम दहशतगर्दी को शिकस्त हम दहशतगर्दी को शिकस्त देने के लिए पाकिस्तान के साथ खड़े होंगे। इस सारे अमल में वज़ीर ख़ारजा डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इसहाक़ डार साहब, हमारे वज़ीर दाखिला और चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी साहब ने वज़ीर आज़म पाकिस्तान की हिदायत पे और हमारे दीगर जो इदारे हैं लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़, उन्होंने बहुत काम किया। हम सर एक छोटी सी करारदाद के ज़रिए हुकूमत श्रीलंका का हमें शुक्रिया अदा करना चाहिए और उनकी क्रिकेट टीम का विद द काइंड परमिशन ऑफ द चेयर इफ़ आई मूव द रेजोल्यूशन। लॉ मिनिस्टर साहब, कल जब स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस हुई है सर, उसके लिए भी मैं मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर को और मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स को और डिपार्टमेंट्स जिन्होंने सिक्योरिटी के लिए आज भी 10-15 डिप्टी स्पीकर्स और हेड ऑफ डेलीगेशंस मौजूद हैं, बाकी सब जा चुके हैं, मैं वो भी अप्रिशिएट करना चाहता हूँ। और दूसरा मैं आपको ये भी बताना चाह रहा हूँ कि स्पीकर्स और डिप्टी स्पीकर जो भी स्टेज पे आता था बोलने के लिए पहले इस वाक़े को कंडेम करता था और पूरे वर्ल्ड ने कंडेम किया है, इंक्लूडिंग रशिया। यकीनन जनाब चेयरमैन, दिस इज़ अ क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी यूनिवर्सली एक्नॉलेज। सर हम आप सारा ऐवान आपको मुबारकबाद पेश करता है इस इंटरनेशनल इवेंट के कामयाब इनकाद पे। बहुत अच्छे इंतज़ामात थे, बहुत सारे डिग्निटरीज़ ने दुनिया भर से ये कॉन्फ्रेंस अटेंड की और पाकिस्तान का जो तशख़्ख़ुस है बैनुल अक़वामी बरादरी में और ख़ास तौर पे बैनुल अक़वामी पार्लिमानी बरादरी में सर वो ज़्यादा निखार आया, उसमें वो उभरा है। हम सर मैं पूरे हाउस के बिहाफ पे आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ सर। एंड विद द काइंड परमिशन सर मे आई मूव नाउ द रेजोल्यूशन। Sir, the Senate of Pakistan, recognizing the historic and brotherly relations between Pakistan and Sri Lanka and appreciating the spirit of sportsmanship and mutual trust that continues to strengthen ties between the two nations. Acknowledging the recent decision of the Sri Lankan government and cricket team along with cricket board to continue their tour of Pakistan despite reported security concerns, and noting the exemplary courage, professionalism and goodwill demonstrated by Sri Lankan players and officials. Commending the Government of Pakistan, the Ministry of Foreign Affairs, the Ministry of Interior, provincial authorities and law enforcement agencies for ensuring comprehensive security arrangements, thereby reaffirming Pakistan's commitment to hosting international sports events in a safe and secure environment. Sir, this may be adopted. I now put the resolution before the House. Those who are in favor of the resolution may say aye. Aye. Those against the resolution may say no. I think the ayes have it. The ayes have it. The resolution is passed unanimously. ये पहले मैं इंटीरियर मिनिस्टर साहब इसी मौजू पे बात कर रहा हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू चेयरमैन। सबसे पहले लॉ मिनिस्टर साहब का बहुत बहुत शुक्रिया इस रेजोल्यूशन को पास करने के लिए। मैं सिर्फ चंद चीज़ें बताना चाहता हूँ कि कल के दिन में जब ये बॉम्ब ब्लास्ट हुआ और उसके बाद श्रीलंका की टीम ने ये फ़ैसला किया कि वो वापस जा रही है, उस पर हमारी उनके साथ इंटरेक्शन शुरू हुई और जैसे कि रेजोल्यूशन में मेंशन हुआ है कि उनके बोर्ड ने, उनके प्लेयर्स ने, सब ने बड़ा बहादुरी के साथ ये फ़ैसला किया और उन्होंने यहाँ रहने के लिए उनको बहुत ज़्यादा कंसर्न थे, लेकिन हमने कोशिश की कि वो सारे के सारे कंसर्न दूर करें। श्रीलंकन प्रेसिडेंट ने ख़ुद उनसे बात की कल अपनी टीम के साथ और उनको कन्विंस करने की कोशिश की।
ہمارے فیلڈ مارشل نے خود ان کے ڈیفنس منسٹر سے سیکرٹری سے بات کی اور ان کو کنونس کیا اور پورا شور کرایا سیکیورٹی کے لیے. اور اب پاکستان آرمی، رینجرز اور اسلام آباد پولیس مل کر ان کی سیکیورٹی سنبھالے ہوئے ہے، اور جس طرح وہ ہمارے اسٹیٹ گیسٹ ہیں ان کو ہم اسی طرح کا پروٹوکول دے رہے ہیں، اسی طرح کی سیکیورٹی دے رہے ہیں. زمبابوے کی ٹیم بھی کل رات پہنچ چکی ہوئی ہے، اور اب ہمارے جو میچز باقی رہ گئے ہیں وہ سارے کے سارے ہم پنڈی میں کر رہے ہیں. ایک چیز اس میں مینشن کرنا چاہوں گا کہ جو اسلام آباد میں بم بلاسٹ ہوا ہے اس کے جو مین کلپریٹس ہیں ہم ان تک پہنچ چکے ہیں. جو سوسائڈ بامر جس نے کچہری کے اوپر یہ بلاسٹ کیا اس کا تعلق افغانستان سے ہے. جو وانا میں کیڈٹ کالج پہ جو اٹیک ہوا اس کے سوسائڈ بامر بھی افغانستان سے ہیں، اور یہ دونوں انسیڈنٹس کے لوگ جنہوں نے یہ کیا ان کا تعلق افغانستان سے ہے. یہ ہمارا بڑا سیریس کنسرن ہے، اور آپ کو جیسے پتہ ہے ہم ان سے ڈپٹی پرائم منسٹر صاحب، ڈیفنس منسٹر، خود ہم نے کتنی دفعہ ان کو جا کے یہ بتایا ہے سارا کچھ، لیکن ہمارے لیے یہ بڑا مشکل ہوتا جا رہا ہے کہ جس طرح افغانستان کے لوگ یہاں آ کر ہمارے پر حملے کر رہے ہیں. تو انشاءاللہ تعالی ہم نے اس کے اوپر ڈپٹی پرائم منسٹر صاحب بھی ٹیک اپ کر رہے ہیں ان کے ساتھ، اور جو ممکن ہوا ہم کریں گے. لیکن ہمیں اس ٹائم جو سب سے بڑا ٹارگٹ ہے کہ جو اللیگلی افغان یہاں پہ رہ رہے ہیں ان کو ہمیں یہاں سے نکالنا ہے انشاءاللہ. بٹ آپ سب کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو. جام صاحب ایک سیکنڈ 2 رپورٹس لے کر دیں لا منسٹر صاحب، تو چونکہ امپورٹنٹ ہے. Order number 8, sir. Sir, I wish to lay before the Senate the annual report of Council of Islamic Ideology for year 2021-22 as required under Article 230 of the Constitution of Islamic Republic of Pakistan. Report stands laid. Senator Mohammad Aurangzeb, Minister for Finance Revenue, may move order number 9 on his behalf. Sir, I, on behalf of Minister for Finance and Revenue, to lay before the Senate the annual report for financial year 2024-25 of the Board of Directors of the State Bank of Pakistan on the state of Pakistan's economy as required under subsection 2 of section 39 of State Bank of Pakistan Act 1956. Report stands laid. Order number 10, Senator Aurangzeb, on his behalf. Sir, I, on behalf of Minister for Finance and Revenue, lay before the Senate the annual report of Governor State Bank of Pakistan, the financial year 2024-25, on the achievements of bank's objectives, conduct of business, monetary policy, state of economy, and the financial... May move order number 11. Sir, I, on behalf of Minister for Parliamentary Affairs, to lay before the Senate the annual reports of the Council of Common Interest, CCI, for financial year 2021, 2022-23, and 2023-24, as required under Clause 4 of Article 153 of the Constitution. CCI for financial year 2021, 2022-23, and 2023-24, as required under Clause 4 of Article 153 of the Constitution of Islamic Republic of Pakistan. Report stands laid. Report stands laid. جی بہت بہت شکریہ چیئرمین صاحب. چیئرمین صاحب ابھی جو باتیں ہوئی ہیں اس میں دہشت گردی کے حوالے سے بھی، اور یہ جو انفارچونیٹلی ہماری